Good morning, student. Today we will going to start our chapter from 4 from geography section. Our chapter is natural resources, natural vegetation and wildlife. We have taught in previous classes about resources. We have taught about land and soil, water, and today we will going to start with natural vegetation and wildlife. Today we will discuss about following topics: forest of the world. How many forests and what type of forest of the world. So let's start. Open your page number 139 and chapter 4. Let's start. Natural vegetation. Today we will discuss about natural vegetation. From your childhood, natural vegetation and wildlife must have been objects of your fascination. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आप लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखते हो ना, बचपन से ही आपको बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको लाइक करते हो. डॉक्यूमेंट्रीज ऑन फ्लोरा एंड फॉना मस्ट बी स्टिल एज इंटरेस्टिंग टू यू एज इट वाज बिफोर. जैसे अभी भी वो आपके लिए उतना इंटरेस्टिंग बना हुआ है जैसे कि पहले चाइल्डहुड में था. फ्रॉम द ग्रीन ग्रास एट योर फीट टू द टॉल शेडी ट्रीज, एवरीथिंग दैट ग्रोज नेचुरली इन एन एरिया इज नेचुरल वेजिटेशन. किसी भी एरिया में ग्रीन ग्रास और टॉल ट्रीज वगैरह जो वैसे एरिया पाया जाता है उसको नेचुरल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में आती है, जो नेचुरली ही अपने आप ग्रो करती है. ठीक है. दे प्रोवाइड मैनी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू अस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमारे लिए हमेशा उसके थ्रू होती रहती है. नेचुरल वेजिटेशन इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट इज ए सोर्स ऑफ timber and firewood, softwood for manufacture of paper, fruits, nuts, berries, medicinal herbs. इन सारी चीज़ों की बेनिफिट्स हमें नेचुरल वेजिटेशन से मिलती रहती है. प्रोडक्ट्स लाइक रबर, फिनाइन, तार, टर्पेंटाइन, रेजिन, कॉक एंड एक्सेट्रा. इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. नेचुरल वेजिटेशन से ही ये पॉसिबल हो पाते हैं. ठीक है. नाउ दे आर natural habitats for animals and birds. The plants provide us with life-giving oxygen and purifies the atmosphere by taking in carbon dioxide. है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे के और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हमारे जीवन को वो सक्सेसफुल बनाता है, हमारे लाइफ को सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करता है. The plants bind the soil and prevent soil erosion. They help in replenishing groundwater level. है ना, ग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन करता है प्लांट्स, और सॉइल इरोजन को भी वो प्रिवेंट करता है, उससे भी उसकी रक्षा करता है. तो दे आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ए मैन. इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर ए मैन लाइक सैंड, सॉइल एंड वाटर. द डिफरेंसेस इन क्लाइमेट. व्हाट इज द डिफरेंसेस इन क्लाइमेट फॉर द वेजिटेशन? टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइंस द प्लांट ग्रोथ ऑफ एन एरिया. किस एरिया में किस तरह का प्लांट ग्रो करेगा वो कौन डिसाइड करता है? वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का क्लाइमेट एंड रेनफॉल. टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड रेनफॉल. रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड सॉइल आर अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ पे इन सारे फैक्टर्स के भी इफेक्ट उतने ही पड़ते हैं. एज द अर्थ हैज वेरिड क्लाइमेट एंड डिफरेंट landforms, we can expect growth of different types of plants in different regions. Areas with adequate temperature and rainfall supports growth of large number of trees. Forests have large number of trees growing naturally in an area. तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट ही उसका रीज़न बनता है कि जो फॉरेस्ट में लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स वगैरह जो वहाँ पे ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, वो किसके रीजन से होते हैं? वहाँ का क्लाइमेट, रेनफॉल एंड क्लाइमेट टेम्परेचर के रीजन से ही वहाँ पे होता है. रीजन्स ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स सपोर्ट वास्ट ग्रासलैंड. जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट टू लो रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वहाँ का रेनफॉल मॉडरेट टू लो, मतलब कि जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है और जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल्स होते हैं, वहाँ पे क्या बहुत बड़े वास्ट ग्रासलैंड्स उस एरिया में पाए जाते हैं. वास्ट मीन्स बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड वहाँ पे पाए जाते हैं. Dry regions with very little or no rainfall support very little vegetation of thorny bushes and scrubs. एंड वेरी लिटिल रेनफॉल जहाँ पे होते हैं, बिल्कुल भी
रेयर रेनफॉल्स होते हैं वो वहाँ पे थ्रोनी बसिस एंड स्क्रब्स वहाँ पे पाए जाते हैं. Thus, the original natural plant cover of a region is termed as its natural vegetation. On the basis of varied condition of growth, we can find broad belts of natural vegetation in the world. You have already learned about them in your previous classes. In this chapter, along with their distribution, we will learn about their commercial importance as a resource. In this chapter, we have discussed about the commercial benefits of these resources. Now, the forest of the world. What is the commercial benefits of forest of the world? Different forest and different benefits of all these forests. So, our first topic is tropical evergreen forest. These forests are found in tropical areas with a uniformly high temperature and heavy rainfall throughout the year. यहाँ पे एनुअली मतलब पूरी साल वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और टेम्परेचर वहाँ का हाई टेम्परेचर होता है. द मेन एरियाज आर द इक्वेटोरियल लोलैंड्स ऑफ द अमेजन इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो और जायरे बेसिन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द आइसलैंड ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशन. They are also found in the tropical monsoon lands in area of very heavy rainfall like in India, Sri Lanka and Myanmar. The rainforests of South America are known as selvas. The rainforest of South America. South America का rainforest को selvas कहा जाता है. The climatic conditions support luxuriant growth of trees. The trees of this rainforest are broadleaf, evergreen and have hardwood. वहाँ की लकड़ियाँ बहुत हार्ड होती हैं और ब्रॉडलीफ, पत्तियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं उस ट्रीज की एंड एवरग्रीन, हमेशा हरी भरी रहती है. एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट इज प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पाइसेस. बहुत सारे स्पाइसेस मीन्स मसाले जो होते हैं, बहुत तरह तरह के और डिफरेंट मसाले भी लार्ज मात्रा में पाए जाते हैं. Often concentrated in a small area, as a result, commercial exploitation is difficult. Also, the forests are dark and damp, and the ground is swampy. The thick canopy does not allow sunlight to penetrate to the forest floor, and it has little undergrowth. However, climbers or lianas hang from the branches. All these factors also restrict movement through the forest. Added to this are dangerous of wild animals and insect. These features limit the economic value of this forest. तो इकोनॉमिक वैल्यूज इस फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट बहुत कम पाए जाते हैं. Even unfortunately, large areas of this forest have been destroyed for the highly priced hardwood and to provide land for plantation. उस फॉरेस्ट का लार्ज एरिया डिस्ट्रॉय करके प्लांटेशन के लिए यूज़ किया जा उसको लैंड प्लांटेशन के लिए उसका यूज़ किया गया है. अनफॉर्चुनेटली important trees of this forest include mahogany, rosewood, ebony, cedar, cinchona, ironwood, greenheart and rubber. Minor products like gums, nuts, chicle, lac are also collected from this forest. इस फॉरेस्ट की सारी प्रोडक्शंस हैं और इसका कॉमर्शियली यूज़ करके कॉमर्शियली बेनिफिट्स इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कॉमर्शियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रॉपिकल deciduous forest. Which type of forest is tropical deciduous forest? Tropical deciduous forests are found in the monsoon regions. They are found in the monsoon regions, and tropical evergreen forests are found in heavy rainfall areas, है ना, heavy rainfall areas and high temperatures in this area. There were found the tropical evergreen forest. Tropical deciduous forests are found in the monsoon regions. They have warm and humid climate with seasonal rainfall. The trees of these forests shed their leaves during the distinct dry season. They are found in South and Southeast Asia, mainly in the Indian subcontinent. They are also found in hot, wettest coast regions in some parts of southeastern USA and Chile in South America, East Africa and northeastern Australia. These forests are less dense but have thick undergrowth, cheap labor and better transport
mainly by floating logs down the river are advantages here. Commercially, these forests are more important. Commercially, these forests are also more important. Large areas of this forest have been cleared to provide land for agriculture and settlement. Large areas of the forest is cleared for agriculture and settlement. इस area large deciduous tropical deciduous forest का जो large area है उसको किसको provide किया गया? Settlements के लिए और agriculture के लिए. Commercially important trees of this forest are teak, sal, sandalwood, neem, shisham and bamboo. So this is its commercial benefits of this forest. Now we'll come to next topic, temperate evergreen on these forests. Temperate evergreen, which type of forest these are? We will discuss about this topic. These are luxuriant forests found in eastern margins of continents in temperate belts. They include southeastern USA, southeastern Brazil, southern China, southern Japan, eastern coast of South Africa and southeastern Australia. They were found all of their regions. These are mixed forests with broad-leaved hardwood trees, deciduous trees, shrubby undergrowth and coniferous. Important trees are oak, mulberry, maple, walnut, eucalyptus, camphor and pine. These are the most important trees of this forest. The forests of USA are extensively exploited for commercial purpose. और यूएसए का जो फॉरेस्ट है वो कॉमर्शियल पर्पज से उसको ऑलमोस्ट उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया, मीन्स की डिस्ट्रॉय कर दिया गया. ठीक है. नाउ वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट we will see. In region with a Mediterranean climate with hot dry summers and mild wet winters. Which type of climate? Hot dry summers and mild wet winters. Specific type of broadleaf evergreen trees are found. The areas around the Mediterranean Sea, southern France, Italy, southern Spain, Yugoslavia, Greece, Portugal, Turkey, Algeria and Tunisia have this type of climate and vegetation. They are also found in California and USA, central Chile, southwestern Africa and southeastern and southwestern Australia. The trees of these areas have special adaptation like long roof and wax covered leaves to withstand the summer drought. Little growth takes place during the rainy winter, so the trees have stunted growth and are dwarf trees. They are widely spaced. Dwarf trees means कि विकराल रूप जिसका होता है ना, वाइडली स्प्रेड, बहुत ही वो वाइड टाइप में वो स्प्रेड करती है. ठीक है. ओक्स, कॉक ओक, चेस्टनट, ऑलिव्स, cypress, mulberry, maple, fig are important trees. These trees are important of this forest. They are exported throughout the world. और इसका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में इन सारे प्रोडक्ट्स का, इस ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होता है. On account of this, the Mediterranean lands are known as orchids of the world. Mediterranean forest is also known as orchids of the world. Now, welcome to our next topic, temperate deciduous forest. These forests are found in areas with cool climate and moderate rainfall. Cool areas, cool climate, वहाँ का climate cool ठंडा होना चाहिए and moderate rainfall. Monsoon पे depend जो rainfalls होते हैं, वैसे एरिया में this type of forest we found. They cover northeastern USA and adjoining Canada, central and western Europe, northeastern China and parts of Japan, Korea and New Zealand. This province में वो सारे फॉरेस्ट टेम्परेट deciduous forest पाए जाते हैं. The leaves of deciduous trees change color in autumn. They shed their leaves once in a year at the same time. Important trees of this forest are oak, ash, beech, birch, elm,
poplar, maple, and Douglas fir. Most of the forest of the temperate regions have been removed for settlement, cultivation, and industries. Most of the area of this forest are removed removed for the settlement, agriculture, and industries. Now, welcome to our next forest, coniferous or taiga forest. These forests are found in areas with short warm summers and severely cold winters. These forests are found mainly in two broad belts in high latitudes across North America and Eurasia. नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बेल्ट में वो पाया जाता है. दे इंक्लूड southern Canada, northern USA, Norway, Sweden, Finland, Russia and Siberia. Coniferous forests are also found on high altitudes of the mountainous slopes like Himalayas in India. They are known as taiga in Eurasia. यूरेशिया में taiga नाम से भी जाने जाते हैं. अब इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट coniferous forest. The trees in this forest are tall, straight and conical in shape with needle-shaped leaves. Its leaves are needle-shaped and trees are tall, straight and conical shape. They occur in pure state and have lightweight, softwood. Melting snow helps in transportation of the logs. Timber is the main product of this forest. The softwood is used for making paper, pulp, packaging materials, matchboxes, plywood, etc. Okay, they are exported throughout the world. Commercially, they are the most important forest of the world. Lumbering and is an important occupation in these regions. The dominant trees of this forest are cedar, pine, fir, spruce, cedar, larch, and hemlock. Now, welcome to our next topic, tropical grassland. Which type of grassland? We will discuss about the forest. Now, we will come to our change topic, tropical grassland. Tropical grasslands are found on either side of the equatorial rainforest extending up to the tropical hot dry desert. Hot dry desert में tropical grasslands found किए जाते हैं. They occur in the interior of the continents on the western side of the land masses. They are found in Sudan, Tanzania, Kenya, Zambia or of Africa. Here they are known as savanna. Savanna grassland. Tanzania, Africa में वो savanna grassland के नाम से जाने जाते हैं. They are also found in Brazilian highlands, Brazil and Orinoco Basin of Venezuela, in South America and in northern Australia. They are known as Campos in Brazil, Llanos in Venezuela and Parkland in Australia. They are known different names in different regions. The high temperature throughout the year and moderate to low rainfall supports growth grasses and few scattered trees like acacias and baobabs are सैकर ट्रीज. मतलब बहुत ही रेयर ट्रीज वहाँ पे हैं, एसेसियस एंड बॉब्स टाइप ट्रीज. एंड वहाँ पे ग्रासेस को सपोर्ट करना मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर एंड इट सपोर्ट द ग्रासेस growing. These grasslands abound in wildlife and were famous as game country among hunters. Presently, through government efforts, hunting is prohibited. उस पर बैन लगा दिया कि हंटिंग, शिकार करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था. अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ है उसको. These areas are famous for wildlife safaris. Cattle and sheep rearing is found in some areas of this grassland, while some areas have been cleared for agriculture. कुछ एरियाज को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया, फिर वाइल्ड लाइफ सफारीज बनाया गया है. वहाँ पे फाउंड इन सम एरियाज ऑफ दिस ग्रासलैंड, वाइल सम एरियाज हैव बीन ग्रासलैंड के लिए कुछ एरियाज को छोड़ा गया है और कुछ एरियाज पे एग्रीकल्चर, कुछ एरियाज को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर दिया गया. नाउ विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, temperate grassland. Which type of grassland is temperate grassland? These grasslands are found in the interior of the continents in temperate regions. These are found in temperate regions. These areas have
hot summers and very cold winters. Rainfall is moderate. The temperate grasslands are known as prairies in North America, steppes in Eurasia, pampas in South America, velds in South Africa, and downs in Australia. They are also known as different names in different regions. Short nutritious grasses grow well in these areas. Trees are practically absent. Wheat, maize, oats belonging to the grass family are widely cultivated in this grassland, and cattle and sheep rearing are important economic activities of this grassland. Now we'll come to our next topic, desert vegetation. The hot desert of the world are located on western sides of the continent in the tropics. They include the Sahara Desert and Kalahari Desert of Africa and Atacama Desert of South America, the Arizona Desert of USA, Arabian Desert, Thar Desert of India, and Southwest Australian Desert. Vegetation is negligible in these areas due to the scanty rainfall and scorching heat. Only drought resistance xerophytic plants like cacti can grow here. Date palms grow in the oasis. Desert area में बहुत ज़्यादा प्लांटिंग एंड ट्रीज होती नहीं है, बहुत ही रेयर palm टाइप के और xerophytic plants like cacti can grow here and date palms grow in the oasis. Now we'll come to our last point, today's last point, tundra vegetation. Our today's last point is tundra vegetation. In the next class we will discuss about natural vegetation in India. This is the all vegetation of the world. So we'll come to our last point, tundra vegetation. In the polar region north of Arctic Circle, extremely low temperatures and snow restricts plants growth. Mosses, lichens and some dwarf flowering shrubs grow during the short summer, especially around lakes. समर में ये सारे ग्रो करते हैं और स्पेशली अराउंड लेक्स, मतलब कि जहाँ पे लेक्स छोटे छोटे जो नदियाँ होती हैं उसके आसपास ही वो ग्रो करते हैं. Polar areas of North America and Eurasia have tundra type of vegetation. This type of vegetation is found in higher altitudes of mountains as meadows, pastures and alpine grasslands. Some short branches, junipers and willow trees also grow in the tundra region. So this type of trees also grow in the tundra regions. So students, today's our topic is over. We will continue this chapter in our next class. Thank you.